नमस्कार। हमारे देश में दिव्यांगजनों से संबंधित अधिकारों की बात करें या उनके लिए जो भी सुविधाओं की अगर बात करें तो उस सब को गवर्न करने के लिए राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में लाया गया। और इससे पहले हमारे देश में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 होता था। तो जब 1995 का जो एक्ट था उसमें 7 तरह की कंडीशंस को रिकॉग्नाइज किया गया था जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज माने जाते थे। लेकिन ये देखा गया कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें व्यक्तियों को काम करने में दिक्कत होती है और फिर बहुत मंथन हुआ और उसके बाद 2016 में ये राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 आया जब, तो उसमें 7 कंडीशंस को बढ़ाकर 21 तरह की कंडीशंस को डिसेबिलिटी कंडीशंस में रखा गया। और इस एक्ट में एक बात जो कही गई वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि हम सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी की बात करते थे और हमारा ये कहना था एज ए कंट्री कि ये सोसाइटी का या गवर्नमेंट का एक रोल है कि हमारे जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रदान करें। और इन सब को करने के लिए जब ये 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज इसमें रखी गई तो फिर ये सोचा गया कि कौन कौन सी कंडीशंस इसमें आती हैं। तो इसमें 2016 के एक्ट में जो ड्वार्फिज्म या जिसको हम बौनापन कहते हैं इस कंडीशंस को भी ऐड किया गया। और अगर हम बात करें कि हम पर्सन्स विद ड्वार्फिज्म की अगर बात करें तो कई बार मन में ये भी सवाल आ सकता है कि इन लोगों को किस प्रकार के एजुकेशनल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। एजुकेशनल सेटिंग में जब ये लोग जाते हैं तो किस तरह की सुविधाओं की इन्हें ज़रूरत होती है, क्योंकि आम व्यक्ति के मन में तो एकदम से यही सवाल आ सकता है कि पर्सन जो है वो ड्वार्फ है तो उसको बाकी कोई समस्या नहीं है, चलने फिरने में वो सक्षम है, हर जगह जा सकते हैं, तो उनको क्या, उनके लिए हमें क्या स्पेशल प्रोविज़न करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक ड्वार्फ व्यक्ति जो होता है, जो बौना होता है, उसकी हाइट बहुत कम होती है और हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो एक एवरेज हाइट के व्यक्ति के हिसाब से रखी जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति की हाइट 3 फीट है या उससे 2.5 फीट है या उससे कम है तो ऐसे लोगों को इवन एक चेयर पर बैठने के लिए, जो आम स्टूडेंट्स के लिए जो चेयर होती है उस पर भी बैठने में इनको दिक्कत आ सकती है। तो आज के टेलीकॉन्फ्रेंस में हम यही चर्चा करेंगे कि किस तरह से एजुकेशनल इंटरवेंशन इन लोगों को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्वार्फिज्म है क्या, क्योंकि अगर आम भाषा में हम बात करें कि एक व्यक्ति की जब हाइट बहुत कम होती है तो इसे हम ड्वार्फिज्म कहते हैं और ये जेनेटिक या मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है। और इन जनरल हमारे एक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 फीट 10 इंच से कम का कोई भी व्यक्ति अगर है तो वो ड्वार्फिज्म की श्रेणी में आता है। और फिर उसके बाद उससे नीचे जैसे जैसे हाइट होती जाती है उसी हिसाब से ड्वार्फिज्म की परसेंटेज को निर्धारित किया जाता है। और इस परसेंटेज को निर्धारित करने के लिए जो सरकारी हॉस्पिटल हैं और डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मेडिकल बोर्ड्स होते हैं और मेडिकल बोर्ड में ये निश्चित किया जाता है कि इस हाइट के व्यक्ति को के लिए कितना % डिसेबिलिटी होगा। क्योंकि यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति अगर डिसेबल्ड है और वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का फ़ायदा उठाना चाहते हैं या वो प्रोविजंस और कंसेशंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि उनको कम से कम 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी उनमें होना अनिवार्य है और इसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो जैसा मैंने बात की कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 में 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं जिनके बारे में हम पहले भी टेलीकॉन्फ्रेंसेज में बात करते रहे हैं। तो इन 21 डिसेबिलिटी में से किसी भी डिसेबिलिटी में 40% या उससे ऊपर अगर किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी है तभी वो इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें
तो ड्वार्फ व्यक्ति 4 फुट 10 इंच से कम हाइट के लोगों को कहा जाता है। और RPWD एक्ट क्योंकि एक डिसाइडिंग एक्ट है इसके लिए, तो इसमें एक डेफिनेशन जो दी गई है वो है ड्वार्फिज्म मीन्स अ मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन एन अडल्ट हाइट ऑफ 4 फीट 10 इंच और 147 सेंटीमीटर्स और लेस। तो ये इसकी परिभाषा हुई। अब हम जानते हैं कि इसकी कॉजेज क्या है, किस कारण से ड्वार्फिज्म हो सकता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये हो सकती है, रैंडम जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से भी हो सकता है, एबनॉर्मल बोन ग्रोथ की वजह से, हेरिडिटरी भी एक इसका कारण है, किडनी डिजीज की वजह से भी ये हो सकता है। अगर पेरेंट्स को किडनी डिजीज है तो ये चीज हो सकती है। एक रेयर डिसऑर्डर्स है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्डाइलो एपिफाइसियल डिस्प्लेजिया कंजेनाइटल, जिसको शॉर्ट में SEDC कहा जाता है। इसकी वजह से भी ड्वार्फिज्म हो सकता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ड्वार्फिज्म हो सकता है, और पुअर न्यूट्रिशन या और दूसरे जो हार्मोन्स हैं उनमें कोई इम्बैलेंस हो जाए, उनमें कोई कमी हो जाए, इसकी वजह से भी ड्वार्फिज्म हो सकता है। हाँ, अब जानते हैं कि ड्वार्फिज्म के सिम्टम्स क्या हैं, मतलब कैसे सामान्यतः हम जब भी किसी ड्वार्फ व्यक्ति को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये एक एवरेज से कम हाइट का व्यक्ति है, लेकिन उसमें किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बहुत शॉर्ट आर्म्स और लेग्स होंगे, जिसकी वजह से डेली लिविंग में इनको दिक्कत आती है, रोज़मर्रा के कामों को करने में इनको दिक्कत आ सकती है। बस में चढ़ना है तो वो उनके लिए एक चैलेंज हो सकता है, और अगर किसी वॉशरूम को यूज़ करना है तो वहाँ कुंडी लगाना या वॉशरूम की जो शीट्स होती हैं उनको यूज़ करना भी इनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। पीने के पानी की कहीं व्यवस्था है, उस पानी को पीने के लिए भी वहाँ तक टैप तक पहुँच पाना भी इनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसी तरह से आप लगा सकते हैं कि रोज़मर्रा की जीवन की जो भी चीज़ें हैं वहाँ उन कामों को करने के लिए इनको चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इनकी हाइट बहुत कम होती है। इसके अलावा बहुत बड़ा माथा हो सकता है, और ब्रीदिंग में कई बार दिक्कत हो सकती है। स्पाइन जो है वो बहुत उसमें नैरोइंग होती है, छोटी हो जाती है, बहुत छोटी रहती है, और जनरली धड़ का साइज जो है इनका वो नॉर्मल से बड़ा होता है, और कुछ केसेस में नॉर्मल भी हो सकता है। इसके अलावा रिब केज जो है दैट इज पुअरली डेवलप्ड, और कुछ केसेस में आर्म, लेग और टोर्सो शॉर्ट होता है। एक्चुअली डिपेंड करता है कि कौन सी तरह का ड्वार्फिज्म है, और हाथ का, पैर का साइज और हाथ का और सिर का साइज कई बार क्या हो सकता है कि वो नॉर्मल भी हो सकता है, और एक्चुअली ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। हर इंडिविजुअल में अलग तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, और स्पाइन और हिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इन लोगों में हो सकती है। इसके अलावा फुट डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, पैर टेढ़े भी हो सकते हैं, अंदर की तरफ भी हो सकते हैं या बाहर की तरफ भी मुड़े हुए हो सकती है। इसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट जो है वो हो सकती है, यानी इनका तालू जो है कटा भी हुआ हो सकता है। फेशियल बोन्स जो है वो फ्लैट भी लग सकती है, कई बार इनको चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, और क्लब फुट हो सकता है, और कुबड़ हो सकता है, स्कोलियोसिस जिसको हम कहते हैं, और एल्बो की मोबिलिटी जो है वो भी कम हो सकती है। इसके अलावा कुछ केसेस में हेड जो है, सिर जो है वो डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज होगा, धड़ छोटा होगा और सिर बहुत बड़ा होगा, और बहुत माथा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। नेक बोन्स जो है वो अनस्टेबल हो सकती हैं, ट्विस्टेड फीट हो सकता है, झुके हुए पैर हो सकते हैं, मुड़े हुए पैर हो सकते हैं, और इनका जो ग्रोथ रेट है वो स्लोअर होता है बाकी लोगों के मुकाबले में, और डिलेड और नो सेक्सुअल डेवलपमेंट ड्यूरिंग टीनेज। इसके अलावा शॉर्ट फिंगर्स, और ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि फिंगर्स के बीच में जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा होती है।
और अगर हम देखें कि ड्वार्फिज्म कितनी तरह के होते हैं, तो दो तरह का होता है, और एक है डिस्प्रपोर्शनेट ड्वार्फिज्म और दूसरा है प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म। तो डिस्प्रपोर्शनेट ड्वार्फिज्म, जैसा कि इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि बॉडी का जो साइज है वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है। कुछ पार्ट जो है वो बॉडी के वो छोटे होते हैं, और दूसरे पार्ट जो है वो एवरेज साइज के हो सकते हैं या अबव एवरेज हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये ड्वार्फिज्म जो है डिस्प्रपोर्शनेट ड्वार्फिज्म कहलाता है। और ये ग्रोथ के कारण, जो जब बॉडी की जो ग्रोथ होती है उस वक्त ये प्रपोर्शनेट उनका विकास होता है, वृद्धि होती है, जिसकी वजह से ये ऐसा दिख सकता है। और प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म में जितनी बड़ा बॉडी का जो साइज है, जो हाइट है, उसके हिसाब से सारे पार्ट ही स्मॉल होंगे, या सेम डिग्री, जितना छोटा, अगर 2 फीट का भी व्यक्ति होगा तो 2 फीट के व्यक्ति के हिसाब से प्रोपोर्शनेट अमाउंट में बॉडी की ग्रोथ होती है। और ये ओवरऑल ग्रोथ जो है वो इसमें प्रभावित होती है। और कई केसेस में कोई और डिफिकल्टी या कोई और डिसेबिलिटी भी इनके साथ आ सकती है। कई बार कोई लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, कहीं कुछ लोगों को सुनने में कोई दिक्कत हो सकती है, या हो सकता है कि आंखों में दिखाई देने में कोई दिक्कत हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में ये होगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है उसमें डिफरेंस होता है, और इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से ही डिसेबिलिटी होती है। और ड्वार्फिज्म की भी बात करें तो वो भी कंडीशन अलग हो सकती है। और हमें ये देखना है एज अ टीचर या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर हम हैं, कि किस तरह की डिसेबिलिटी उस स्टूडेंट में है, और उसके हिसाब से हमें इंटरवेंशन इनको प्रोवाइड करना है। और रही बात असेसमेंट की, कि हम इसका असेसमेंट कैसे करा जाता है। जो यूजुअली जो है, कोई भी व्यक्ति देखेगा किसी को, बहुत एवरेज से कम हाइट के व्यक्ति को हम देखते हैं तो कहेंगे टू शॉर्ट या बौना है। और बहुत बार इसका एक इम्प्लीकेशन जो होता है वो ये भी होता है कि ड्वार्फ लोगों को कई बार लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ जो मूवीज़ बनती हैं उनमें ड्वार्फ को एक कॉमिक कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है, या सर्कस में जो पहले काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होता था सर्कस, वहाँ ड्वार्फ लोगों को इस्तेमाल करते थे लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इन लोगों को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है, इनको हम मजाक का एक साधन बनाते हैं। तो जब ऐसे स्टूडेंट हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उनके साथ अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें और उनका मजाक ना उड़ाएं। और असेसमेंट की बात रही तो वो चाहे डिस्प्रपोर्शनेट वैरायटी हो या प्रोपोर्शनेट हो, दोनों का ही हमें असेसमेंट किया जाता है। जो भी मेडिकल बोर्ड है उसके हिसाब से वो करते हैं और देखते हैं वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस किस तरह की है। और इसका एक बेसिक जो रूल है वो है कि 1 इंच वर्टिकल हाइट जो अगर कम होती है तो 4% परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी पूरी बॉडी में मानी जाती है। तो उसी हिसाब से जैसे हाइट होती है उसी हिसाब से एवरी 1 इंच पे 4% डिसेबिलिटी उनकी हो जाती है। 4 फुट 10 इंच का व्यक्ति होगा उसकी 4% डिसेबिलिटी, 4 फुट 10 इंच से अगर 4 फुट 9 इंच होगा तो फिर उसको 8%। तो इस तरह से ये डिसेबिलिटी का परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। और बेसिक बात है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, हमें ये देखना है कि उनके लिए हमारा स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर एक्सेसिबल हो। और अगर हम ड्वार्फ बच्चों के टर्म्स में बात करें तो वहाँ एक्सेसिबिलिटी के लिए हमें हो सकता है कि कुछ स्पेशल प्रोविज़न करने पड़े। कई बार स्टेयर्स बहुत ऊंची है तो रैंप का इस्तेमाल किया जा सकता है। हैंड रेल्स जैसे होती हैं तो इनको हैंड रेल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमें स्पेशल सपोर्ट कुछ भी उनको प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ अगर एसएससी में लिफ्ट नहीं है तो इनको चढ़ने के लिए दिक्कत हो सकती है, तो फर्स्ट फ्लोर पे क्लास ना करके ग्राउंड फ्लोर पे इन बच्चों की क्लास कराई जाए। इसके अलावा इंडियन स्टाइल के वॉशरूम्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि ये बाथरूम को आसानी से इस्तेमाल कर सकें।
इसके अलावा जो बाथरूम की कुंडी होती है, जो बंद करने के लिए जो लैच होती है, वो अगर ऊपर होगी तो वो बंद करने में दिक्कत हो सकती है, तो वो नीचे के लेवल पे नीचे लगी होनी चाहिए। तो ये इस तरह की मॉडिफिकेशंस कुछ हम अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी नीचे के लेवल पे होनी चाहिए, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो स्पेशल प्रोविज़न किया जाए कि उनके लिए पानी भर के रख दिया जाए या वो पानी उन तक पहुंच सके। इसके अलावा लिफ्ट जो है, और एसएससी में है या जो भी हमारा सेंटर है वहाँ पे लिफ्ट है, वहाँ वो भी इन लिफ्ट तक भी पहुँच सके। लिफ्ट के बटन्स यूजुअली जो है वो रीचेबल स्टेट पे होते हैं। और क्लासरूम में जब ये पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी सीटिंग अरेंजमेंट उनकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। उनके लिए लो लेवल की बेंच बनवा दी जा सकती है, या लो हाइट की चेयर को रखा जा सकता है। आजकल काफ़ी सारी चेयर्स तो इस तरह की हैं जिनमें कि उनकी हाइट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन अगर ये केस है कि उन चेयर्स को भी इस्तेमाल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो स्पेशल काइंड की चेयर इनके लिए ली जा सकती है। जो छोटे बच्चों के लिए जिस तरह की जो चेयर्स आती हैं, लो हाइट की जो चेयर्स आती हैं, उनको इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और रैंप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी लर्निंग नीड्स को अगर हमें पूरा करना है तो इनको स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर तक पहुंचने का रास्ता इनके लिए होना चाहिए। इसके अलावा अगर उनको वहाँ स्टडी सेंटर में मूवमेंट करना है, वहाँ जाना है, कैंटीन तक जाना है, वैसे तो ये अपने आप जा सकते हैं। इनको उस तरह की अगर कोई फिजिकल और कोई कंडीशन नहीं है तो इनको वो दिक्कत नहीं होगी। जो दिक्कत होगी वो होगी हाइट की वजह से जो चीज़ें हैं, तो वहाँ अप्रोप्रिएट सपोर्ट इनको प्रोवाइड कर दिया जाए। देन लाइब्रेरी एक्सेसिबल होनी चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी में जनरली बुक्स जो हैं उन तक पहुंचना इनके लिए मुश्किल हो सकता है, तो वहाँ इनको मदद की जाए। जो भी बुक इनको चाहिए तो वो बुक को निकाल के दे सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर किसी को हाथ से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उनको हैंड रिटन असाइनमेंट की जो हमारी कंडीशन होती है उसको वेव ऑफ कर देना चाहिए। और इग्नू में ये प्रोविज़न है भी, जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं उनको हैंड रिटन असाइनमेंट देने वाली जो कंडीशन है वो वेव ऑफ की गई है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे स्टडी सेंटर पे ये भी सोच सकते हैं कि देखिए इनकी हाइट ही तो कम है, ये लिखने में शायद कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उस तरह की सोच हम ना रखें अपने साथ। इसके अलावा स्टूडेंट की अगर कोई और भी नीड है जो हम फोर्सी नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ उनकी डिसेबलिंग कंडीशन की वजह से उनको अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि हमारे पास जब ये स्टूडेंट्स आते हैं तो इनके साथ किस तरह का बिहेवियर किया जाए। सबसे पहली बात कि हम उनको ग्रीट करें अप्रोप्रिएटली, हेलो, हाय, नमस्कार, या जो भी, या उसने हमें ग्रीट किया तो हम उसका जवाब भी दें। और सबसे ज़रूरी जो होता है जब हमारे पास ये स्टूडेंट्स आते हैं जिनको डिसेबिलिटी है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनको कंफर्टेबल फील कराएं। और अगर उनको बैठने की ज़रूरत है तो हम उनको चेयर पे बैठने के लिए कह सकते हैं। उनकी बात को ध्यान से सुनें। और जो पहले मैंने बात बताई, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको देखकर हम मजाक ना करें या उनका हम कंपेयर ना करें किसी के साथ, या जो दूसरे बच्चे जो या दूसरे स्टूडेंट्स उनके साथ में हैं, हम उनके साथ भी उनका कोई कंपैरिजन ना करें। और हम उनसे ये भी ना पूछें कि उनकी ये डिसेबिलिटी क्यों हुई है, इतने छोटे कैसे रह गए, भाई आप खाना नहीं खाते हो क्या, आप ठीक से खाना खाया करो, या इस तरह की कोई भी चीज़ें हमें उनको नहीं कहनी है। और सिंपैथाइज ना करके हम, क्योंकि वो डिसेबल्ड है कि हाय बेचारा आपके साथ ऐसा हो गया, ये ना करके हम एम्पैथाइज करें। हम ये कोशिश करें कि हम उनको किस तरह से एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि वो डिसेबल्ड है, तो वहाँ अंडर एस्टिमेट ना करें हम उनको। और जो इन्फॉर्मेशन वो पूछ रहे हैं वो हम उनको प्रोवाइड करें। उनके साथ उनका मजाक ना करें हम बिल्कुल भी। और गाइडेंस जो है उनकी पढ़ाई के संबंध में जो है वो हम उनको दे दें।
और किसी भी बात के लिए उनको दुत्कारें ना, धिक्कार ना करें उनके ऊपर, एंड बहुत साफ भाषा में उनके साथ बात करें। कई बार क्या होता है कि हम बहुत शॉर्ट एब्रीविएशंस यूज़ कर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को हमारे वो एब्रीविएशंस पता हो, तो ज़रूरी है कि हम उनसे साफ भाषा में क्लियरली बात करें और जो भी जानकारी है वो हम सही जानकारी उनको प्रोवाइड करें। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम ये ना कहें कि नहीं हमारे पास नहीं है, आप वहाँ जाइए, अच्छा वहाँ नहीं है तो वहाँ जाइए। तो वो चीज़ें जो हैं, जो हम शिफ्टिंग वाली जो चीज़ें कई बार होती हैं, वो हमें नहीं करनी है। इसके अलावा असाइनमेंट्स के बारे में और जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही साफ, बिल्कुल वेग इन्फॉर्मेशन हम इन स्टूडेंट्स को ना दें, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन क्लियर दी जानी चाहिए। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि इनको क्लैरिटी हासिल करने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वो क्लैरिटी इनको बिल्कुल साफ शब्दों में वो क्लैरिटी दें। स्टडी मटेरियल टाइम से प्रोवाइड करें, ये तो हमें हर स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करना है। इसके अलावा ई ज्ञान कोश के बारे में हम जानकारी इनको प्रोवाइड करें कि हाँ हमारा जो मटेरियल है वो सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए हमारे पास एक सुगम्य पुस्तकालय की मेंबरशिप भी हमारे पास है, तो उसके विषय में भी इन स्टूडेंट्स को बताना जरूरी होता है। ई कंटेंट मोबाइल ऐप के बारे में भी हम इनको इन्फॉर्मेशन दें कि भाई हाँ आप अपने मोबाइल पे भी अपने मटेरियल को पढ़ सकते हैं और आपको फीस में भी वेव ऑफ दिया जाता है, तो उसके बारे में भी हम बात करें। और इसके अलावा एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि बहुत बार जब स्टूडेंट्स किसी भी प्रोग्राम के लिए एनरोल्ड होते हैं उन्हें ये नहीं मालूम होता कि एग्ज़ाम्स के लिए हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, असाइनमेंट देने पड़ेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट हमारी जो प्रोग्राम गाइड है या प्रोस्पेक्टस है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। तो उनको शुरू में ही ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आप इसके असाइनमेंट्स पढ़ें, इसके असाइनमेंट तैयार करें। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल्स करना ज़रूरी है, और असाइनमेंट सबमिट करेंगे आप, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। और एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको एग्ज़ाम फ़ीस भी सबमिट करनी है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम फ़ीस अलग से जब नहीं ली जाती है तो हो सकता है, क्योंकि ये 12th के बाद भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, तो उनको वो जानकारी हो सकता है उसका अभाव हो, तो हमें वो बताना उनके लिए हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भी हम बताएं कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम के टाइम में किस तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, उनको स्क्राइब की फैसिलिटी मिल सकती है, तो वो सब जानकारी भी हम इन बच्चों को दें। और हमारे स्टडी सेंटर में या जहाँ हमारा एग्ज़ाम सेंटर है कि वहाँ हमारा एक्सेसिबल टॉयलेट है, कहाँ है टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, वो बहुत क्लियर उनके लिए बताना ज़रूरी होता है। और दूसरा, अगर प्रैक्टिकल्स में कोई हेल्प करने उनको ज़रूरत है प्रैक्टिकल करने के दौरान, तो वो हेल्प भी उन्हें देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल्स हैं, वहाँ जो शेल्फ्स हैं वो बहुत हाइट पे होती हैं, तो उस वक्त हो सकता है कि बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उनको वहाँ कोई चैलेंज हो, तो उसके लिए एक सपोर्ट या एक हेल्प जो है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम सेंटर चेंज के लिए अगर उनको कोई हेल्प की ज़रूरत होती है, या एग्ज़ाम सेंटर बहुत फार एरिया में है जहाँ उनको जाने में दिक्कत हो सकती है, तो जो भी पॉसिबल सपोर्ट है इन स्टूडेंट को, इनकी डिसेबिलिटी को देखते हुए हमें वो हेल्प करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इनको इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में भी बताने की ज़रूरत है कि हाँ हमारा असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट के इतना % मार्क्स होता है, प्रैक्टिकल्स है तो उसके इतने % मार्क्स होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क है तो उसके कितने % मार्क्स होते हैं, और देन टर्म एंड एग्ज़ाम के, और हमारा सिस्टम क्या है, किस तरह से आप अपने ग्रेड कार्ड को ऑनलाइन देख सकते हो। जब आप सब सब्जेक्ट में पास हो जाते हो तो आपको फिर
फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स मिलता है, उसके बाद आपको डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये स्टूडेंट्स को बहुत बार पता नहीं चलती है, और कई केसेस में ये देखा भी जाता है कि स्टूडेंट्स जो है उनको ये पता भी नहीं होता है कि इसमें प्रोजेक्ट भी है, एंड वो फिर हमारे पास आते हैं कि अरे हमने तो सारे पेपर पास कर लिए लेकिन हमारी मार्कशीट नहीं आई अभी। फिर पता चलता है कि अरे इनका तो प्रोजेक्ट था और इनको पता नहीं था इसका। तो ये इस तरह की जो जानकारी है हमें सभी स्टूडेंट्स को हम देते हैं, लेकिन जब हम डिसेबल्ड स्टूडेंट की बात करते हैं तो उस वक्त हमारे लिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इनकी स्पेशल नीड होती है। और डिग्री लेने के लिए अगर आप ने कोई सब्जेक्ट पास कर लिया तो आपको डिग्री चाहिए, तो उसके लिए आपको फीस सबमिट करनी पड़ती है, कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, वो सारी जानकारी। फिर अगर आपको फर्दर पढ़ाई करनी है तो कौन कौन से कोर्सेज में कहाँ आप देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर लें, इस साइट पे चेक कर लें, वो सब बताएं। और अगर कहीं दूसरी जगह जाके आपको पढ़ाई करनी है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है या ट्रांसक्रिप्शन चाहिए होती है। तो ये इस तरह की जो भी जानकारी इनकी स्टडीज़ के कंप्लीट होने के बाद भी जो प्रोसेस होता है वो हमें इनको बताने की ज़रूरत होती है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो हमारा होता है कि हम उन्हें एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें, ताकि वो जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम और सहायक हों। तो वो सहायक होने के लिए ज़रूरी है कि क्लासरूम वो जहाँ जा रहे हैं अपने क्लासेस करने के लिए वो वेलकमिंग हो, प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो। वहाँ उनको ये ना लगे कि उनको देख के कोई मजाक कर रहे हैं या उनको देख के थोड़ा अलग तरह का लोगों का एक रवैया है, तो वो चीज़ जो है वहाँ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा इन स्टूडेंट्स की नीड को ध्यान में रखते हुए अगर क्लासरूम में कोई अडेप्टिव चेंजेस करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने बात की कि बेंचेस की साइज़ अगर छोटा करने की ज़रूरत है या उनके लिए स्पेशल साइज़ की चेयर्स की ज़रूरत है या स्टेयर्स में कोई और हमें कुछ अडेप्टेशन करना है, तो वो अडेप्टेशंस करने की ज़रूरत होनी चाहिए। बेसिक बात जो है वो ये है कि एक ड्वार्फ स्टूडेंट जो है वो उन सारी चीज़ों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए जहां तक बाकी स्टूडेंट्स की पहुंच होती है, और उसके लिए हमें अडेप्टेशंस करने की ज़रूरत है। और अगर हम अडेप्टेशंस नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो हमें उनको अप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ताकि वो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट यही होता है कि वो अपने आप उस वातावरण में काम कर सकें। और अपने जो ड्वार्फ स्टूडेंट हैं उनको हमें उनकी साइज के हिसाब से नहीं देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि अरे ये तो इतना छोटा है, तो उनकी एज के हिसाब से एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम उनके साथ करें, ना कि हम उनको बच्चा समझ के व्यवहार करें कि ये तो बहुत छोटा है, इसकी हाइट कम है। वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। और उनसे जो हमें एजुकेशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बाकी बच्चों के समान ही होनी चाहिए। सभी एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए हम प्रोत्साहित करें, और डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की हम जो है बात करें। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि अगर हमारे ड्वार्फ स्टूडेंट्स हमारी क्लास में जब आते हैं तो उनको स्टडी सेंटर को अप्रोच करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, रीजनल सेंटर को अप्रोच करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो हमें ये देखना है कि कैसे हम उनको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, और अगर हम उनको एडिक्वेट और प्रॉपर अप्रोप्रिएट सपोर्ट देते हैं तो वो अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एंड दे कैन बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। समाज निर्माण में वो अपना योगदान दे सकते हैं, और जो पढ़ाई करने का उनका सपना है उसको वो पूरा कर सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट की और एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की, और हम एज अ यूनिवर्सिटी, एज अ स्टडी सेंटर, एज अ रीजनल सेंटर एक इनेबलिंग और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रदान कर इनको भी समाज का एक अभिन्न और प्रोडक्टिव मेंबर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।
Are you a fresh graduate? Do you want to fulfill your educational aspiration by pursuing higher education in various interdisciplinary and multidisciplinary areas like environmental science, environment and occupational health, philosophy, sustainability science, folklore and culture studies? If yes, the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies offers various programs like Master's Program, Graduate Program, Postgraduate Diploma, Certificate and Appreciation Program. The school offers 5 Master's Program. Master of Science, Environmental Science. The eligibility criteria for MSc Environmental Science is Graduate in Science, BTech, BE, Agriculture Graduate, Forestry Graduate and Veterinary Graduate. School also offers Masters in Environment and Occupational Health, Masters in Sustainability Science, Masters in Philosophy and Masters in Folklore and Culture Studies. The eligibility criteria for these 4 Masters program is graduate in any discipline. The school also offers various socially relevant and need-based PG Diploma program like PG Diploma in Sustainability Science, PG Diploma in Environment and Occupational Health, PG Diploma in Folklore and Culture Studies, and PG Diploma in Migration and Diaspora Studies. The school also offers PG Certificate in Climate Change and Avshist Prabandhan mein Praman Patra. The school also offers 2 doctoral programs, PhD in Environmental Science and PhD in Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies. The school offers various innovative technologies and multimedia for providing a very excellent student support system. The study material is Hello learners, on behalf of School of Vocational Education and Training, I, Urshla Kant, welcome you all to this session on the course MSEL 037, that is the practical aspects of the program Master of Science in Information Security, MSCIS. Before going to the course MSEL 037 in detail, I want to focus first of all on 3 important things. The first thing is the study material. I am getting so many phone calls and emails regarding that we have not received the study material till today. So I want to tell those learners that the study material, if you have not received the hard copy through any postal delay, you can refer our soft copy of the study material on our Ignou website. You can refer to the e-Gyan Kosh, which is available on our Ignou website, that is www.ignou.ac.in. And you can just search our school link, and then you can refer all the soft copy of the material. The second thing is assignments. That is very, very important. Assignments for July 2023 session are already available on our Ignou website. You need to download these assignments and write these by your own hand and send these
to your concerned regional center or study center by 31st October 2023. It is compulsory to submit these assignments, then only you can sit in or appear in term end exams. So the assignments are very, very important. Then the third is the term end exams. The exam form for the sitting for the term end exam for December 2023 exams is already available on our Ignou website. You need to fill this exam form for theory as well as practical. So for example, if you want to sit for this MSEL 037 course, which is a practical course, so you need to give the fees for that course and you have to submit that form on our Ignou website. So this is all about the minimum these three things, that is study material, assignments and term and exam form. Now the today's session is on the course MSEL 037, which is a practical course. We have chosen this course today because I am receiving so many calls and emails from the learners that we have not received any information regarding this course, as this is a lab course. So many regional centers, they are not able to inform you that this lab course is very, very important, and the exam for this lab course is online. You will get all the information from your concerned regional center and study center. So as you already know, this our program Master of Science in Information Security. The objectives of this program is to spread awareness of information security and protection. The second aim of this program is to provide protection and security to personal data and to build data-oriented infrastructure in the companies. And the third aim is to raise high professional ethics in the individuals and students towards providing information security. And the fourth aim of this our program is to experiment and learn the skills and techniques which are needed for providing protection and security to our information. So as you are seeing all these objectives and aims, so if we want to fulfill these aims, so you have to study the practical components of information security. So this is all about this course MSEL 037. This comes under semester 4. So in semester 4, there are 4 theory courses, which is MSE 033. That is Web Application Testing and Audit. The second course of this semester 4 is MSE 034, that is E-Commerce and Cyberspace. And the third course of semester 4 is MSE 035, that is IoT Security. And the fourth course, that is theory course, that is MSE 036, which is latest trends in information and cyber security. So all the practical components of this MSE 033, MSE 034, MSE 035, MSE 036, we have all combined all these practical things in the one course, that is MSEL 037, that is the practical regarding web application testing and audit, e-commerce and cyberspace, IoT security, and latest trends in information and cyber security. So all the practical aspects of these terms comes under MSEL 037, the practical course. This course MSEL 037 introduce you to the practical work, as I have already told in the beginning that all the practical components of all the theory courses which are there in the 4th semester comes under MSEL 037. So you have to do all the practical work with the most powerful concepts like web application audit, mobile apps audit. This is very, very important nowadays. This is the need of an hour.
malware detection and mitigation. As you know, we are getting so many malware in our computer, and we have to be very, very careful. So to protect from these malware, we need to know what are the protection tools available in the market, and we should know about all the knowledge of these tools and how to use those tools. That is very, very important. And IoT device auditing. As you know, this is very, very important. So these comes under this course MSEL 037. These practicals is based on the courses of MSE 033, 34 and 35, as I already told you in the beginning. So you are required to gain hands-on experience on this practical component of these courses, and after completing this course, you will be able to solve the problems for various techniques of web application audit, mobile apps audit, malware detection and mitigation, and IoT device auditing. So these are very important things, and it is the need of an hour, and we should know how to protect our computer from all these components and from all these malware and viruses. In order to have better understanding, you are advised that firstly you will get the conceptual clarity, that what are these terms, what do you mean by these terms. So that is very, very important. The first step is theoretical background of these concepts. You should know what is these concepts and which are presented in this course, and then implement that understanding to solve the problems which are given in the various sessions of this course. So in this course, you have to deal with the various problems which are given in our study material. In the end of every unit, you will get all the these sessions and problems there, and you need to solve those problems on your computer in your study centers. So this course consists of the following lab sessions which are in your screen. First is a lab session on web application audit. The second is lab sessions on mobile app audit. Third, lab sessions on malware detection and mitigation, and the lab sessions on IoT device auditing. So we have the lab sessions on all these topics. Now I will come to the lab session on web application audit. This is the first unit of this block. As you know, website application audit is a complete review of all the elements and the features which influence the website's search engine visibility. As we are surfing the internet every day for small things, for large things, we are using Google. So we need to surf on the internet. So we should know कि while searching website or any while searching, you have to be very, very careful about कि what are the fake websites available, what are genuine websites. So this is very, very important to have the understanding of that. So the accepted technique provides thorough insight into any website, overall traffic and specific pages which we are surfing. So we have to be very, very careful while surfing any website on the internet. The main goal of website audit is to identify the features and the existing vulnerabilities. Vulnerability means that the virus or the malware which infect our files. So we have to be very, very careful and while dealing with existing vulnerabilities in the website programming. So the objective of this lab session on web application audit is to apply the benchmark tools to evaluate the performance and weakness that damage our website performance. So this is very, very important. You should know. It covers the principles of web application audit and also understand OWASP. This term is very, very important. The OWASP is Open Web Application Security Project, which is used to identify the various common attacks
which are very common nowadays, cyber attacks, which exist in any web application. So as we are using internet every day, so we are getting this cyber attacks, and we have to be very, very careful. And this lab sessions on web application audit includes hands-on practice to implement various tools which are available, and how to use those tools is well explained in this block. To the various tools and attacks which are available to identify the services and the severity level of the coding in any web application. So we have to be very, very careful, and we have to understand all these details in a greater way. And as I already told you, our study material is self-learning material in which teacher is inbuilt, and the language is very simple, and this is written by our well-known experts. So if you will read the material, you will come to know each and every topic very clear. Then the learning outcomes of this unit is, after completing this unit, you should be able to recognize and describe the common security vulnerabilities in web application. For example, SQL injection or the cross-site scripting, that is called XSS, and broken authentication and session management. So these terms you should know, and you should know what is the definition of these terms and how we can use these terms to prevent the cyber attack. Then after completing this unit, you should be able to use a vulnerability scanning tool. The vulnerability scanning tool is, like for example, Burp Suite or OWASP ZAP. So we should know how to use these vulnerability scanning tools. This will come to know in this unit, and these tools are used to scan a web application for security vulnerabilities and to generate a report of the findings, and to analyze the results of a vulnerability scan, and we should prioritize the vulnerabilities based on severity and impact. So these are the learning outcomes of this unit. And you should also be able to develop a plan, because before going to a further detail, you have to develop a plan before beginning to remediate the vulnerabilities which are identified in the scan report, including prioritizing the fixes and recommending those specific action to mitigate the risk. Like to resolve those risks, we should know what plan we should use. Then you should be able to use the manual testing techniques to verify and validate the results of the vulnerability scan, identify additional vulnerabilities that may not have been detected by the scanning tool, and demonstrate the impact of a successful attack. So all these things we will able to understand in this unit, that is the lab sessions on web application audit. And after reading this unit, you should be also able to clearly and brief in the document about findings and recommendation in a professional report, which includes an executive summary, detailed technical findings, and actionable recommendation for remediation, and also demonstrate the ethical conduct throughout the auditing process, including respecting the confidentiality of the client, adhering to ethical hacking principles, and obtaining appropriate permissions for testing. So this is very, very important. Now I will tell you what are the sessions are there in this particular unit. The first session is to understand the operating system, that what is operating system, network services, and open ports on the web server. Then only you can identify the detailed PHP version and configuration, technical specification of the targeted website application. Then you have to apply the
footprinting techniques. These footprinting techniques are used to avoid that attack. So then apply the footprinting techniques. Then DNS records, which are only for any live website, and who is record only for any live website. So this is the first session you have to read in this unit. The second session is identify the features of a mobile responsive design, that is CMS, details of SSL certificate for a target website. This is the second session. Then the next session is under the explain with example DVWA emulator and list the vulnerabilities which are covered in it. So this is the third session. The fourth session is identify the open ports on the web server along with the OS detection technique and running services using Nmap utility. This Nmap utility is very, very important, and all the details about this Nmap utility is there in our self-learning material. The fifth session is on the identify the level of severities which are using the ZAP proxy server. So these are the different tools which we can use to identify the different level of severities. Then the sixth session is on to identify the level of severities using burp suit. This is another tool which is available, and apply the interception technique and temper the data submitted via any web form. The seventh session is apply F Google Docs. This is very common. You must have heard about F Google Docs, and identify the website based on log files, open FTP server email list, live cameras, audio, video and PDF files. So this is very, very important, session 7. Then session 8 is to use manual testing techniques to verify and validate the results of the vulnerability scan, identify the additional vulnerabilities that may not have been detected by the scanning tool, and demonstrate the impact of a successful attack. So these are the sessions. Then the next session is report finding. As you know, in the last you have to find out the report, what you have find out in the report and the recommendations, which includes an executive summary, detailed technical findings and actionable recommendations for remediation. The last session is to demonstrate ethical conduct throughout the auditing process, including respecting the confidentiality of the client, adhering to ethical hacking principles, and obtaining the appropriate permissions for testing. So these are the sessions which are there in this lab session on web application audit. Now I am coming to the second unit of this block, that is lab session on mobile apps audit. This mobile application audit is a critical process, as you know, which helps to evaluate and test the security, functionality and overall quality of a mobile application. We have already provided a step-by-step guide on how to perform a mobile application audit in our self-learning material. That is where the language is very simple, as I already told you, and you will understand all the terms in a very clear way. Then after completing this unit, these are the learning outcomes that you should be able to explain the architecture of mobile applications, which include different components such as user interface, data storage and network communication. And you should be able to familiar with common security issues in mobile application such as authentication, authorization, data leakage and malware. This malware, as I already told you, you have to be very, very careful and you have to use those tools to avoid malware. Then you should be able to identify the vulnerabilities in mobile applications such as insecure data storage,
weak authentication, and network communication issues. Then the next learning outcome of this unit is to conduct various security tests on mobile application such as penetration testing, vulnerability scanning, code review. The next learning outcome of this unit is to propose and implement measures to mitigate security risk in mobile application such as encryption. This encryption is very, very important. You should know what is encryption, access control, and secure coding practices. Now I will tell you about the steps for mobile application auditing process. Thus, there are 6 steps involved. The first step is to define the audit objectives. That what are the audit objectives? We should define very clearly. The next step is to identify the audit scope. That what is the scope of the audit. The third step is to determine the audit methodology. So what methodology we should use, that we should determine in this step. The step 4th is to prepare the audit environment. This is very, very important. We need to know what are the tools available. So we need to prepare the audit environment before going further. The 5th step is to conduct the audit. That is the main actual process. And the last step is to document and report the results. So these are the 6 steps which are involved in mobile application auditing process. Now I am coming to the sessions which are there in this unit. The first session is to study the application of industry standards, which are the what are the industry standards are there, and the best practices for mobile application security. The second session is to list OWASP mobile top 10 and be able to apply them in practical sessions. The third session is to identify the vulnerability in mobile application. For example, insecure data storage, weak authentication, and network communication issues. The next session is to install and use of mobile application auditing tools such as penetration testing, vulnerability scanning, and code review to identify the vulnerabilities and to conduct the security testing. So this is the 4th session. 5th session is to write technical reports to document the vulnerabilities which are found in the system. The 6th session is to demonstrate practical skills which are available to identify and justifying the security risk in mobile applications. The 7th session is to apply industry standard tools and techniques for mobile application development and security. And the 8th session is to recommend measures with justification for tackling security issues in the organization. Then the 9th session is to propose and implement the measures to mitigate security risk in mobile application. For example, encryption, access control, and secure coding practices. And the last session on this unit is to list the suggested measures which you can use for regular mobile application auditing of business. So these are the 10 sessions which you need to do in your lab at your study center. So this is all about this 2 units of this MSEL 037, the practical aspects of web auditing, the IoT security, and e-commerce and cyberspace. So I hope you have enjoyed this session, and if you have any further query, you can write an email to our email ID, that is mscis@ignou.ac.in. Thank you so much.
Hello friends, are you interested to pursue MA Education program? School of Education, Indira Gandhi National Open University offers a quality MA Education program, and this is one of the popular program of Ignou. This program has awarded as the best master degree program of Ignou. Let us focus upon the objectives of the program. To enable learners to understand and appreciate knowledge structures and paradigms of education, to make learners understand education as a discipline from different contexts and perspectives, to develop professionals for effective participation in educational actions and discourses in different areas of education, and to create a community of scholars adequately equipped for participation in educational discourses. Friends, MA Education program has wider career opportunity and placement. After pursuing MA Education program, you can appear UGC NET and JRF in education discipline. You can also pursue PhD in education discipline. After pursuing MA Education program, you can be a faculty in the liberal discipline of education, and you can also be a faculty in teacher education institutions with a BA degree along with your MA Education degree. You can also be an educational entrepreneur, and you can also work in different national and international organizations just like Commonwealth of Learning, UNESCO, UNICEF, World Bank, and also different research institutions. The eligibility of the program is a bachelor's degree from any recognized university. This program is of minimum duration of 2 years and a maximum duration is of 4 years. Medium of instruction is English. However, the learners can write their assignment, term and examination, dissertation proposal and dissertation report in Hindi language. The program is offered in both the sessions of January and July as per the Ignou practice. Now let us go through the courses that you have to study in the first year and second year of your program. Both continuous and term and evaluation processes are adopted in MA Education program. 30% credit is given to continuous assessment, that is the course-wise assignments, and 70% weightage is given to term and examination that are conducted in the month of June and December every year. So far as dissertation is concerned, dissertation report will be evaluated, and at the same time viva-voce examination will be taken for your dissertation course. For further information, you can write to the program coordinators, Professor Kumar Das. You can also write to me, Dr. Niradhar De. For more detail, you can go through the common prospectus which is uploaded in Ignou website www.ignou.ac.in. Why wait? Come and join with us and enjoy happy learning. Namaskar friends, I welcome you all in this class of mathematics
So, in last class yesterday we were discussing combination. We are discussing the chapter the techniques of counting, in which we have already seen permutation. Yesterday we have discussed combination, and today we are going to discuss binomial theorems. So, something was left in combination, so let me finish it first. Combination. So, if out of n distinct things there are r things to be taken together at a time, then yesterday we discussed that its formula is factorial n divided by factorial r divided by factorial n minus r. So, you should remember this formula, and then we were discussing inclusion and exclusion. So, suppose from n distinct things, r things are to be taken at a time, and maybe s things x things are to be always included. So, this s should be greater than 0 and it should be less than r. So, in this case let us first consider the permutation. You know, permutation is important when order is important. Order, we are concerned with the order of the things, then we take permutation. So, let us say if s things are to be always included, how many number of ways
we can select out of n things r things to be taken. Condition is that s things should be always included. So, this will be, first we will take s things because this has to be included always, and this has to be permuted at r places. You see, r places are there, and there are s things to be placed. So, this can be done in RPS manners. Okay. So, that S vacant places can be chosen from R places in permutation in RPS ways. So, it will be RPS multiplied by, because simultaneously then rest of the places are to be also filled. So, now the number of things remained, distinct things, will be n minus s, because we have already taken s things at in the r places. So, from the remaining n minus 1 n minus s things, we can arrange things at the remaining places. So, remaining places will be r minus s, because we have already filled s things. So, the remaining places will be r minus s. So, this will be the number of permutation, number of ways in which we can arrange r things taken at a time from the n distinct things, and the condition is that s things are to be always included. Now, the next condition for exclusion, suppose that s things are always excluded. So, what will be the number of ways in which we can arrange the things? That is, in this case, NPR will be equal to, since S things are to be always excluded, so we have only n minus S things to choose with, because S things are to be included. So, we do not consider S things as our input set or domain. So, this will be n minus S P, and we have to choose R things. So, n minus S P R, isn't it? Because S things we have excluded, we do not have to select. So, only out of n minus S remaining distinct things we choose R things, that will be equal to n P R. So, let us take what happens in case of combination. Suppose
the order is not important, only grouping is to be done, then what will be its formula? So, if order is not important, then we have to find out NCR, that how to select, in how many ways R things may be selected in a group out of n distinct things. The condition is that S things are to be always included and S is greater than 0 and less than R. So, first we select S things and put it in the group, and then from the remaining n minus S things, we make group of the remaining things, say R minus S. Since here grouping is important, arrangement is not important. So, S things we have selected, there need not be any other arrangement for that. In the case of permutation, we permuted out of R things, R places, how from S things it will be filled. So, RPS was coming here, but here it is not required because this is a grouping. So, order is not important. So, this will be the formula, and the second one, is that S things are to be excluded, always excluded, This is easy because which are to be always excluded, you do not consider them as your domain. So, this NCR combination will be equal to, just as in the case of permutation, this will be equal to, we do not consider S things. So, we have to choose only out of n minus S things, and we have to choose all the R things, because nothing has to be filled out of these S things. So, this will be formula n minus S C R. Now, let us take an example. Let us take a problem. Suppose a team is to be selected from a squad of 11 players. We have to select from a squad of 18 players, we have to select 11 players. (18) players squad is there. 11 to be selected.
out of these 3 players, now the first question is 3 players are to be always included. You see, just as we select in a cricket team, say 3 very good players are there. So, their seat is fixed, they will not be disturbed. So, in how many ways? Here grouping is important because order is not important. So, we will select out of, we will first select the 3 players which are anyway to be included. Okay. So, these 3 players will be selected, and then the players, remaining player will be 15. So, we have to select 11 players from the 18 players, but 3 players we have to include necessarily. So, from the remaining 18 minus 3, we have to do grouping of remaining players, because 3 position we have already filled. So, we have to now fill only 8 places, that is 11 minus 3. Say for a World Cup team, captain, vice captain and one more player, say Rohit Sharma and KL Rahul and then Virat Kohli. So, these are fixed. So, they will come in any way. Now, from the rest other 15 players, how many groups can be made for remaining 8 places? So, this will be equal to 15C8, which will be equal to factorial 15 divided by factorial 8 into factorial 15 minus 8, which will be equal to factorial 7. So, you can calculate. Now, the second question, that out of this squad 2 players are injured. So, we have to exclude these 2 players. So, the condition is that we have to select 11 players out of 18 players, out of which 2 injured players are there. So, we have to exclude them. So, in how many ways we can form the groups? So, this will be equal to 18 C11 which is equal to, since 2 players are injured, so we do not consider 2 players as our domain. So, it will be 18 minus 2 C11, because we have to select all the 11 players from the remaining 16 players. So, it will be 16 C11, that will equal to factorial 16 by factorial 11 by factorial 16 minus 11, that is equal to 5. So, you can calculate now.
Now, the third we can consider that both the conditions that always select 3 players and 2 players are injured. So, 2 players you have to exclude, both the conditions are there, then what will be the number of ways? I mean, out of 18 player we have to select the team of 11. So, that will be equal to, now since 2 players are injured, so we will consider only 16 players are there. So, it will be 16 and 3 players we have to select anyway. So, we select the first the 3 players, then there are remaining players will be 11 players are to be selected. So, 3 we have already select, the remaining position will be 11 minus 3. So, this will be equal to 16 C 8. Factorial 16 divided by factorial 8 into factorial 16 minus 8 will be 8. So, now you can solve. So, now this completes your inclusion exclusion problem. Now, let us see the binomial theorem. Okay. So, binomial, you already may be knowing, must be knowing that if there are in any expression 2 terms are there, we call it binomial. If only one term is there, that is mononomial, and if 3 terms are there, we call it trinomial, and there are many terms, then polynomial. So, binomial means that 2 terms are there. So, a binomial theorem for positive integral index. Okay. Binomial theorem is very important theorem, and it will be used at many places in your courses. Quite useful. So, suppose positive integral
index. It means that suppose there are two terms and its power is n exponent. So, this exponent n is positive integral, that is what it means. So, the proof of this theorem is not in your course. So, I will only write down the expression, and it is not difficult. I think it is easy to remember, and I will tell you how to remember it. So, its expression is n is here. So, we start from n c 0 and then a to the power n into b to the power 0. Now, the next term will be n c 1 a to the power n minus 1 into b to the power 1. Next term will be n c 2 a to the power n minus 2 into b to the power 2. Next term would be n c 3 a to the power n minus 3 into b to the power 3. So, you see there is a pattern, and this pattern is not difficult to remember. At the end it will come the last two terms I am writing n c n minus 1 a to the power 1 and b to the power n minus 1. Last term would be n c n a to the power 0 and b to the power n. So, this is the formula. It is not difficult to remember, because you can see it starts from n c 0, and this is called binomial coefficient. These are all binomial coefficients. Binomial coefficients. So, you can see binomial coefficient very systematic n c 0, n c 1, n c 2, n c 3 till n c n. Now, the two terms are there a and b. So, we start with a n and b 0, and then successively we go on decreasing a n minus 1 by 1 and then increasing b by 1. So, whatever the subscript here at C, it will come at the superscript of B. Again n c 2 a n minus 2 b square. So, only by looking 2-3 times you can understand the pattern and remember the formula. So, let us take an example.
Okay. So, example is x plus 1 by x to the power 5. So, now you can do its binomial expansion. It will be equal to, say we start with NC0, n is 5 here. So, 5 C0 and then x to the power 5 and 1 by x to the power 0, which will equal to 1. So, I am not writing here. Now, next term will be 5 C1 x to the power n minus 1. So, x 4 and 1 by x to the power 1. So, 1 by x will come here plus 5 C2 x cube, because n minus 2 will be x cube into 1 by x square. So, it will be 1 by x square plus 5 C3, it will be x square, because the power of x is decreasing successively and this is increasing 1 by x cube plus 5 C4 x to the power 1 divided by 1 by x 4 plus 5 C5 x power 0 will become 1. So, it will be 1 upon x to the power 5. So, this is the binomial expansion of this x plus 1 by x to the power 5. Now, let us, you can calculate 5 C0, 5 C1, 5 C2. It is easy. You can 5 C0 will be equal to, yesterday we calculated that NCR is equal to NC n minus R. We proved it. So, 5 C0 will be equal to 5 C5, which will be equal to factorial 5 upon factorial 5. So, it will be equal to 1. 5 C1 is equal to 5 C4 will be equal to factorial 5 divided by factorial 4, which is equal to 5. 5 C2 is equal to 5 C3, which is equal to factorial 5 divided by factorial 2 into factorial 3. So, this will be equal to 5 into 4 into factorial 3, should cancel it out. So, 5 into 4 by 2, which is equal to 10, and now we have done all, isn't it? Because 5 C4 we have already taken here,
and 5C1 we have already taken here, 5C0. So, if we put all these things here, this expression will become this 5C01. So, it is x5 plus 5C1 is equal to 5 and x4 divided by x. So, it will be x cube plus 5C2 is equal to 10 x cube upon x square, it will be x plus 5C3 is equal to 5C2. So, it will also become 10 and x square upon x cube. So, it will be 10 upon x, and then 5C4 will be equal to 5 x upon x4. So, it will become x cube, 1 x will cancel out here, and then this is equal to 1. So, it will be equal to 1 by x to the power 5. So, this is the final expression for the expansion x plus 1 by x to the power 5. Now, now we can see a couple of more examples, but let me first finish, and then at the end we will take examples, because there will be shortage of time. So, first I will write the expansion of other type. And then we will take examples. Now, suppose binomial theorem for any index. See, we have seen this binomial theorem for positive integral index. Now, let us take for any rational index. So, what is the expansion? Suppose here I am not writing a plus b, I am writing it 1 plus x n, because a plus b you can convert it in the form of 1 plus x to the power n, and this expansion is
1 plus nx plus n into n minus 1 by factorial to x square. You can see that a systematic pattern is here. So, it is not difficult to remember this expansion plus n into n minus 1 into n minus 2 by factorial 3 into x cube, and it will go on, and I am writing the rth term, that will be equal to n into n minus 1 into n minus 2, it will go to n minus r minus 1 divided by factorial r into x r, and it will not stop here, it will go on, because if n is not a positive integer, so it will go till infinity, and this sum will be finite only if it is valid only if mod x is less than 1. Otherwise, its sum will be infinite. So, this is the formula. Now, suppose that you have a binomial a plus b to the power n for any rational index. So, what are you going to do? A plus b so suppose that in A and B, suppose that A is greater than B. If A is greater than B, then you take A outside, so it will be equal to A n 1 plus B by A to the power n. So, in that case B by A will be less than 1, isn't it? So, its expansion would be this A n we can take outside,
and within brackets 1 plus x to the power n expansion we know. So, we will write 1 plus n into b by a plus n into n minus 1 by factorial 2 into b by a square and plus 8 into n minus 1 into n minus 2 divided by factorial 3 b by a whole cube, and plus it will go on. But since b by a is less than 1 mod of b by a, so this sum will be finite. And suppose the case is that if b is greater than a, in that case what we do, that we take b outside. Since b is greater, so we take b outside and it will be 1 plus a by b to the power n, and mod a by b will be less than 1. So, its expansion will be, similarly we can expand it, it will be equal to b to the power n we take outside and 1 plus n a by b plus n into n minus 1 by factorial 2 a by b square plus n into n minus 1 into n minus 2 by factorial 3 a by b cube, plus we can go on writing the terms, and as we, since a by b, mod a by b is less than 1, so as we go on increasing, its value will be become smaller and smaller, and after some time we can truncate and we can take its summation. So, now we will take say one example, we have time. So, let us take the example (7 plus 2x minus 5). Okay. Let us quickly take one example here, so that it will be clear to you. We can take any fraction also in the exponent. It should be rational, that is all. So, similarly we can do, and we can take examples of
fraction also. So, 7 plus 2x, 7 plus 2x to the power minus 5. So, this we can write 7 to the power minus 5 I have taken outside, and here it will become 1 plus 2 to the power 7x, 2 to the power 7 into x to the power minus 5. This will be valid if 2 to the power 7 2x by 7 mod should be less than 1. It means that mod of x should be less than 7 by 2. So, this is the condition. So, now this expansion will be 1 by 7 to the power 5, and this will become 1 plus 2x. So, this will become 1 plus n minus 5 into 2 by 7x plus minus 5 into minus 5 minus 1 divided by factorial 2 into 2x by 7 square plus minus 5 into minus 5 minus 1 into minus 5 minus 2 divided by factorial 3 2x by 7 cube and plus it will go on increasing. Now, friends, the point which I want to make here, that these binomial coefficients, this will never become 0. So, it will not, it will go till infinity, it will not be in the case of positive index it becomes 0. Why it becomes 0 at after n? Because when you come to n minus n, it will become 0, and then afterwards all the terms will be 0. But here it will never become 0 because this is minus index, and you go on decreasing minus 1, minus 1, minus 1, and minus 1, minus 2, then minus 3, minus 4. So, it will go to minus infinity, and this term, this binomial coefficient will never be it will be equal to 0, but the only thing that if mod of x is less than 7 by 2, so this term will less than 1, and its further power will go on decreasing, and the terms will become smaller and smaller. So, then it is easy to find its sum. So, now you can simple mathematics is there, you can do, and you see you must have understood that how we do the binomial expansion, and in lot many courses you will come across such cases where you have to use these binomial expansions to solve many problems. Thank you very much. Thank you.
Dear learners, I welcome